हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने पहला सेंसर चूज़ किया है वो है आरजीबी सेंसर नेम्ड ADJD S371999। लेट मी टेल यू कि सबसे पहले कि आरजीबी क्या होता है। एक्चुअली आरजीबी स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू, फॉर योर सिंपलेस्ट अंडरस्टैंडिंग। नाउ अब ये सेंसर हमने चूज़ कर लिया। कोई भी सेंसर जब हमने देख लिया, हमें पता होना चाहिए कि उसकी एप्लीकेशन क्या है। एज यू सी, लिखा हुआ है कि कलर डिटेक्शन, दिस सेंसर कैन डिटेक्ट कलर्स RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, these are colors now. So this sensor can detect colors. second thing is second thing is color detection, measurement, illumination sensing for display, black light adjustment. Like, if in short अगर हम बताना चाहें तो ये सेंसर यूज़ होता है आपके मोबाइल डिस्प्ले पे। आपने देखा हुआ है आपका मोबाइल का डिस्प्ले आपकी लैपटॉप की स्क्रीन में, आपकी टीवी स्क्रीन में, लाइक ए लार्ज एंड वाइड एप्लीकेशंस। इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। ओके, लाइक एज यू सी, मोबाइल अप्लायंसेस, कंज्यूमर अप्लायंसेस। ओके, द सेकंड थिंग वी हैव टू डिस्कस इज व्हाट इट्स मैकेनिज्म। क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि ये सेंसर वर्क कैसे करता है, तो आप कैसे इसको यूज़ करोगे? आप नहीं इसको यूज़ कर सकोगे। ओके, as in this tab you can see that this sensor has an array of photodiodes with four different filters. Look, let me tell you. Look, here it is written the two wire serial output allows direct interface to microcontroller or other logic control for the signal processing without additional components such as analog to digital converter. Look, here in datasheet is given. Can you see that function block diagram? There are four filters. There's there's LED anode, input is coming, and the ADC is attached with the sampling block, and it is just giving the output. And here different parameters are written. Like you can say that storage temperature where you can store the sensor, minimum -40 degree centigrade units written, maximum 85. Input voltage is important, VIN. That input voltage must be in range between 2.5 and 3.6, all input pins. DC फॉरवर्ड करंट मैक्सिमम 10 हो सकता है आपके पास। दो स्टोरेज टेम्परेचर रेंज अब वही वाली है, -40 टू 85। ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज इज, टेम्परेचर रेंज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज टेम्परेचर कैन चेंज द वर्किंग ऑफ सम सेंसर। टेम्परेचर आपके सेंसर की वर्किंग चेंज कर सकता है। सो आप जब भी एक सेंसर यूज़ करने लगे, उसकी डेटा शीट में से उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर ज़रूर देखें, अदरवाइज यू विल बी रिग्रेटफुल। ओके, लेट्स गेट बैक टू दिस आउटपुट आउटपुट करंट load high 3 maximum, you can say. Okay, this just simply, these are all the given data sheets in this sensor. We have to thoroughly study this thing. We have studied mechanism, interface. If you talk about the interface, let me get back you to the this is the graph. Look, this is the graph is very important. Relative sensitivity in different wavelengths, its sensitivity varies. We have to look into this. This is the this is the interface. Here is the interface. LED anode, four filters you have, and you can say here it is written that array of photodiodes, four different filters and working is written. Okay, this is the first sensor, the RGB sensor, ADJD S371QR999. Okay, the second sensor I have chosen is LA95 series. Look, it is a miniature of AC LVDT. LVDT का मतलब है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। ओके, अब सबसे पहले समझते हैं कि ये सेंसर करता क्या है, इट्स एप्लीकेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
These sensors are used in packaging equipment, factory automation, robotic actuators, OEM system. Look, अगर आप इसकी और एप्लीकेशन की तरफ चले जाएं, आपके सोलर पैनल्स में, आपके रोबोटिक असेंबली सिस्टम्स में, आपके पैकेजिंग इक्विपमेंट में, मोटर व्हीकल्स में, सब जगह ये पोजीशन सेंसर यूज़ होते हैं। अब ये ना हमारे लिए फ़ायदेमंद इस तरह है कि ये सेंसर बिल्कुल कम्पैक्ट साइज़ के होते हैं। ये सेंसर बिल्कुल कम्पैक्ट साइज़ के होते हैं, मतलब आइडियल साइज़ इनका होता है, ठीक है। और मज़े की बात, इनकी बहुत आला परफॉर्मेंस होती है, लाइक के इनकी और स्ट्रोक टू लेंथ रेशो भी अच्छी होती है। इसकी वजह से ना these sensors are very beneficial. Okay, so let's see this diagram. Let me show you this diagram. Look, here is what wiring diagram. There are pins. There are pins in it. You can see these pins. Pin E, pin F, P, R, I, and there is a core. And just you can wire these things like this. And here it is given nominal range plus 2.5 and range is given sensitivity. Look, sensitivity is a very important factor. अगर आप कोई भी सेंसर चूज करना है, उसकी सेंसिटिविटी देखनी चाहिए कि वो कितना सेंसिटिव है, कितनी उसकी डेविएशन हो सकती है। इट्स कोर लेंथ इज गिवन, its body length, null point is also important factor. Look, here you can see available ranges. It ranges from 0.025 to 2 inches, ठीक है। excitation frequency, ह्यूमिडिटी, वाइब्रेशन, एवरीथिंग इज गिवन। लुक, कोई भी सेंसर आप चूज़ कर रहे हो ना यार, आपको उसकी डेटा शीट देखनी ही पड़ती है। तो डेटा शीट आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्यों यूज़ कर रहे हो, इसकी रेंज क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपको देखनी ही पड़ती है। एक्साइटेशन वोल्टेज, null voltage is also important. Operating temperature -65 to 275 Fahrenheit, and temperature coefficient, these are also an important factors. Look, features miniature AC, LVDT. I told about you LVDT. Look, okay, so this is the our second sensor, and it is used as a position sensor. पोजीशन सेंसर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पसेस, OEM सिस्टम्स में हम ये यूज़ कर सकते हैं। और कैसे यूज़ कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसकी वायरिंग डायग्राम भी मैंने आपको बता दिए। और ये इसके जो पॉइंट्स थे कि इसकी रेंज कितनी होती है, आपके कनेक्शंस किस तरह लगते हैं, ऑप्शंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट, आई हैव टोल्ड अबाउट इट। सो दिस वाज देयर सेकंड सेंसर। ओके, सो द थर्ड सेंसर आई हैव चोजन इज IR proximity sensor. आप सबको पता होगा कि IR सेंसर क्या होते हैं। IR मींस इंफ्रारेड। ओके, तो IR सेंसर बेसिकली ये करते हैं कि लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और इससे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स जो होते हैं, इनकी काफ़ी सारी एप्लीकेशन। लेट्स टॉक अबाउट देयर एप्लीकेशंस फर्स्ट। they are used they are used in they are used in our cars, they are used in gas cylinders, they are used in self-driving cars, automation. Look, here is written that they can detect light on nearby objects, ठीक है। by the और अब इनकी वर्किंग किस तरह है कि दिस सेंसर रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से आ रही होती है। इसका हमें डिस्टेंस मालूम करना है, ये जो हम पर्टिकुलर फंक्शन प्रॉक्सिमिटी सेंसर से परफॉर्म करें। ओके, लेट्स let's see this diagram. Look, here is 5 volt DC source applied. This is ground pin and this is output pin. Here is IR transmitter. This, look, अब देखते सी वर्किंग। ये जो ट्रांसमीटर है ना, ये ट्रांसमिट कर रहा है लाइट, और जो सरफेस है वो इसको कर रहा है रिफ्लेक्ट। एज यू कैन सी, this is transmitting light and this is reflecting light, and this light reflected by this surface is received by the transmitter. So by doing this, IR sensors can perform
The functions here ये क्या लगा हुआ है, वेरिएबल रजिस्टर लगा हुआ है आपके रेंज की सेंसर की रेंज को डिटेक्ट करने के लिए ये लगा हुआ है। अब ये जो है ना, ये आईसी लगी हुई है, आईसी लगी हुई है, आई रिसीवर लगा हुआ है। अब देखें ज़रा, हम लोग इस तरह इसको कनेक्ट करते हैं, वायर लगाते हैं 5 वोल्ट की वीसीसी, ग्राउंड टू ग्राउंड, 5 वोल्ट टू 5 वोल्ट, और आउटपुट टू आउटपुट, हम इसको कर लेते हैं सिंपल। सो लेट्स see this, its data sheet. Let's see, this is schematic, this is also very important. You can see circuit diagram. Features: 5 volt DC operating voltage, input output pins are 5 volt and 3.3 compliant, range up to 20 centimeter, adjustable sensing range, built in ambient light sensor, 20 milliampere supply voltage mounting. फीचर्स: आई एस सेंसराइजेशन, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज होते हैं, टू डिटेक्ट, तो फॉर डिटेक्शन, टू for measurement. Here you can also see that proximity sensor are used phones, recycling plants, or driving cars, aircraft systems, assembly lines. There are many functions this proximity sensors. So this was our third sensor.